Bismillahirrahmanirrahim. In this lecture, we'll be talking about Darwinism or Darwin theory of natural selection. All of you know that Charles Darwin is uh, gave a convincing idea about evolution in the form of theory of natural selection. Charles Darwin, an English naturalist, was the most dominant figure among the biologists of the 19th century. He made an extensive study of nature for over 20 years, especially in 1831 to 1836 when he went on a voyage on the famous ship HMS Beagle and explored South America, the Galapagos Islands, and other islands. He collected the observations on animal distribution and the relationship between living and extinct animals. He found that existing living forms share similarities to varying degree not only among themselves but also with the life forms that existed millions of years ago, some of which have become extinct. एक्चुअली चार्ल्स डार्विन जो था वो भी फिक्सिटी ऑफ स्पीशी पे बिलीफ रखता था, लेकिन अपने समुद्री सफ़र के दौरान जो उसने इतनी डाइवर्सिटी ऑब्ज़र्व की तो मुख्तलिफ़ फॉसल बेड्स जो उन्होंने ऑब्ज़र्व किए, जो रेन फॉरेस्ट उन्होंने ऑब्ज़र्व किए और गैलापागोस आइलैंड के अंदर जो इन्होंने फिंचेस और जाइंट टॉर्टोइसेस को देखा, तो वहीं से इनका आइडिया डेवलप हुआ कि जो एनिमल्स है दे आर नॉट फिक्स्ड एंटिटीज़, बल्कि वक्त के साथ साथ ये चेंज होते हैं। डार्विन के मेन पोस्टुलेट्स जो है वो ये है कि ज्योमेट्रिक इंक्रीज जो है पॉपुलेशन में होती है। एक्चुअली डार्विन ने माल्थस का एक ऐसे ह्यूमन पॉपुलेशन पे पढ़ लिया था जिसके बाद उसने ये आइडिया जो है डेवलप किया। Main postulates of Darwinism are geometric increase, limited food and space, struggle for existence, variations, natural selection or survival of the fittest, inheritance of useful variations, and speciation. Now let us one by one. Geometric increase. According to Darwin, the population tend to multiply geometrically, and the reproductive powers of living organisms are much more than required to maintain their number. डार्विन ने ये आइडिया पेश किया, जो उन्होंने माल्थस का वो ऐसे पढ़ा था, उसके बेस पे उनका ये आइडिया डेवलप हुआ कि हर ऑर्गेनिज्म के अंदर कुदरत ने ओवर प्रोडक्शन की एक टेंडेंसी रखी होती है। अगर उस टेंडेंसी को यूटिलाइज करके उस तवातर से रिप्रोडक्शन करे तो एक दो किस्म के स्पीशी ही पूरी यूनिवर्स को जो है वो भर देंगे। अगर हम एक्वेटिक इन्वायरमेंट में फ़िशेस की एग्जांपल दें तो फ़िशेस मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ एग्स प्रोड्यूस करती है। अगर 2-3 अक़साम के फ़िशेस जितने एग्स प्रोड्यूस करते हैं, अगर सारे के सारे फर्टिलाइज़ हो के ज़ायगोट बनाते हैं और फिर उसके बाद वो डिफरेंट डेवलपमेंटल स्टेज से हो के एडल्टहुड तक पहुंचते हैं, तो खाली 2-3 अक़साम के फ़िशेस से ही पूरा ओशन जो है वो भर जाएगा। लेकिन नेचर क्या करता है कि नेचर इसके ऊपर चेक रखता है। देयर इज़ ऑलवेज लिमिटेड फूड एंड स्पेस। Darwin states that though a population tend to increase geometrically, the food increases only arithmetically. So two main limiting factors on the tremendous increase of a population are limited food and space. These do not allow a population to grow indefinitely. Then what happened? Struggle for existence. Due to rapid multiplication of population but limited food and space, there starts an everlasting competition between individuals having similar requirements. In this competition, every living organism desires to have an upper hand over others. This competition between living organisms for the basic needs of life, like food, space, mat, etc., is called struggle for existence, which is of three types. Intraspecific,
इंट्रास्पेसिफिक स्ट्रगल जो है ये सेम स्पीशी के मेंबर्स में देखने को मिलेगा. फॉर एग्जांपल टू डॉग स्ट्रगलिंग फॉर अ पीस ऑफ मीट. इंटरस्पेसिफिक स्ट्रगल ये जो है आपको मुख्तलिफ स्पीशी के मेंबर्स के दरमियान देखने में मिलेगा. फॉर एग्जांपल बिटवीन प्रेडेटर एंड प्रे. Environmental or extra-specific struggle between living organisms and adverse environmental factors like heat, cold, drought, flood, earthquakes, light, etc. Now, variation is the law of nature. According to this law of nature, no two individuals except identical twins are identical. This everlasting competition among the organism has compelled them to change according to the condition to utilize the natural resources and can survive successfully. Darwin stated that variations are generally of two types: continuous variation or fluctuations and discontinuous variations. On the basis of their effect on survival chances of living organisms, the variations may be neutral, harmful, and useful. So natural selection or survival of the fittest is another postulate. Darwin stated that nature selects only those individuals out of the population which are with useful continuous variations and are best adapted to the environment, while the less fit or unfit individuals are rejected by it. Inheritance of useful variation. Darwin believed that the selected individual pass their useful continuous variation to their offspring so that they are born fit to the changed environment. The last postulate is speciation. According to Darwin, useful variations appear in every generation and are inherited from one generation to another. So the useful variation go on accumulating, and after a number of generations the variations become so prominent that the individual turns into a new species. So according to Darwin, evolution is a gradual process and speciation occur by gradual changes in the existing species.